Welcome to Lisha's. Today we're going to explore a restaurant in Sharjah, which is known for its #1 biryani in Sharjah. So without any further, let's get into the video. This restaurant is located near Sharjah St.MICHAELS Church. The area is Al Yarmouk. You can see that it has got many awards for this biryani, and it is the #1 Hyderabadi biryani in UAE. This restaurant has a long journey of 13 years. One Mr. Mohammed Shabeer is the main ustad of this hotel. He is from Hyderabad. His son is also taking part of this. सालन है, बघारा बैगन बोलते हैं, हैदराबादी स्पेशल डिश। फाइल कहाँ है फाइल? ये डबल का मीठा है, हैदराबादी स्पेशल डिश स्वीट। खिड़की ओपन करो। When the lid of the biryani is open, the area is filled with the aroma of the biryani. Hyderabad. So this is Hyderabadi special chicken biryani. चिकन फ्रेश चिकन है, अलरोटा। And is it dum? दम बिरयानी है। Yeah, it is also dum biryani. मटन फ्रेश, चिकन फ्रेश बोल रहे हो? Yeah, both are fresh chickens. Mutton is also fresh and chicken is also fresh. Around 120 kilo chicken is sold every day, and around 180 kilo chicken is sold in weekends. This is Hyderabadi biryani. Hyderabad. Special biryani. Special biryani. It is sent here very much. बना के रखना पड़ता है, क्यों पब्लिक आएगा तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग पार्सल बना के रखता है। फिर इधर का कस्टमर आता है तो फिर इधर देते रहता है, तो वहाँ से टोकन लेगा, वहाँ से टोकन पैसा दे के टोकन लेगा, टोकन लेने के बाद इधर से बिरयानी देगा। ये मटन बिरयानी है, स्पेशल चिकन बिरयानी। और का भी ले लेगा, और का ले लो। The ancestors of Ustad had been worked in palaces as cooks in Hyderabad. Kind of tokens over here. This is blue and this is for red. Blue for purpose of mutton biryani and red for chicken biryani. आप किधर गए?
People will rush for their biryanis after Jummah Namaz. Biryani. We ordered chicken biryani. It's so delicious. Love it. Delicious. People from different places visit this restaurant to have this biryani. Mostly Arabs from different regions come here to have this biryani. Many people order a bulk amount. Daily customers bring big containers and it will be filled with biryani and their special chutneys. This is a view that no other restaurants in UAE have. आप कितना साल से जब से बिरयानी ले रहे हैं? सर हम यकीन करेंगे हम यहाँ पर 2002 से 16-17 साल के हो गए थे। जब नया नया ओपनिंग हुआ जब से हम पछाते छोटे भाई को तो 18-20 साल से पछाते। और बिरयानी के बारे में थोड़ा बताओ। बिरयानी तो साहब इनकी बिरयानी के मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। इतनी जगह खाया होगा मगर यहाँ का जो टेस्ट अलग है। हम आज भी डेली आके खाना खाते हैं, हम यहीं खाते हैं बिरयानी। अब किधर क्या? हम हैदराबाद का है, दिल्ली की बिरयानी लेने आता है। बहुत अच्छी बिरयानी है विनोद भाई का, मेरा बेटा जब्बार भाई नंबर 1 रिव्यू है। बहुत खुशी हुआ भाई। बिरयानी कैसे है? बहुत जबरदस्त। ऐसी बिरयानी तो हमने पूरे यूएई में नहीं देखी जो बिरयानी हमको यहाँ मिलती है। हमने सऊदी में भी बिरयानी खाई, लेकिन बिरयानी खाने के लिए हम लोग इधर आते हैं। मैं दम्माम से आया हूँ। हाँ, तो लेकिन कभी भी जब इधर आता हूँ तो बिरयानी खाए बगैर नहीं जाता हूँ। ऐसा टेस्ट और मसाले का जो कॉम्बिनेशन है, खाने के बाद ना कभी एसिडिटी होती है ना कभी जलन होती है। दूसरी जगह जब भी हम खाते हैं तो कभी मसाला ज़्यादा होता है, गरम मसाला ज़्यादा होता है, इधर जलने लगता है। इनकी बिरयानी से हमें कोई परेशानी नहीं होती, ऐसा लगता है घर का खाना खा रहे हैं। अब किधर क्या? मैं बॉम्बे से हूँ। ओके, എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ ബിരിയാണി? ഇവിടുത്തെ നല്ല ബിരിയാണിയാണ്, ഓവർ മസാലയില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ മിക്ക ഫ്രൈഡേയിലും വന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി, ഞങ്ങൾക്കൊരു ടേസ്റ്റബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന വയറ്റിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഫീൽ, കറക്റ്റ് ബിരിയാണിയുടെ ആ കറക്റ്റ് ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാവും. അസിഡിറ്റി ഇല്ലാതാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അസിഡിറ്റി ഇല്ല, പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു നാച്ചുറൽ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു ഡ്രൈ ഫീലിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റേ കുഴമ്പ് പോലുള്ള ആ ഒന്നുമില്ല. വെരി ഗുഡ്, നൈസ്. ചന്ദ്രനുണ്ടോ ഇവിടെ? So my food is over. I'm full. Oh my god, it was very tasty and it was like mostly was amazing. But there was more rush. It was like full of people. We can't even stand. But however we ate the food and our tummy is full. It was nice. So I ate the biryani. I am full but this biryani is very tasty. I ate different types of biryanis from different hotels, but this biryani is super. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി തന്നെയാണ്. ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് തറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം. സംഭവം സൂപ്പറാണ്, അടിപൊളി ഭക്ഷണമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കഴിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാർജ സെൻറ്റ് മൈക്കിൾസ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. സിൽവർ സ്പൂൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കടയുടെ പേര്. ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ഉസ്താദാണ്. ഇവിടെ അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. സംഭവം ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, തിരക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി. താങ്ക് യു. So we ate the delicious biryani made by Shabeer.
and it was so yummy. Thank you for the biryani. And Hyderabadi biryani was awesome. And customers are coming in every minute. So like they've made so many biryani and it's going minute by minute. So they have a really good taste. They got many awards. They got like #1 biryani in Sharjah. That was amazing. They were reported to Khalid Times and Gulf News. Janice, Jennifer and Dundi signing off from this episode of Lisha. Bye. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം. Bye.